Dear student, I am Manohar Patil. आज हम बहुत important formulas देखने वाले हैं. Many times on that formula, so many times they ask the MCQs on NEET or CT examination, and I know that rotational dynamics आपको बहुत tough लगता होगा क्योंकि उसमें so many formulas हैं. अगर आप उसको अच्छे से one by one formulas लिख के अच्छे से prepare करोगे, so you can definitely catch that moment and solve the questions on the basis of rotational dynamics for the different shapes. So most importantly, you have to remember or list out the all moment of inertia of different bodies so you can easily solve that question. So let's we start our today's lecture. So today we have to study about and derive the expression for linear speed and acceleration. आज हमें solve करना है linear speed और acceleration of a solid sphere. Shape आपको अच्छे से याद रखना है. Solid sphere performing the rolling motion. So I know that you know that all of you know that the definition of rolling motion. अभी तक आपको तो याद आ गया होगा, लेकिन मैं और एक बार रिकैप करूंगा. रोलिंग मोशन मींस द बॉडी possesses both ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल. तो ये एग्जांपल देखिए, दिस इज द इंक्लाइन सरफेस, दिस इज द सॉलिड स्फीयर. व्हेनेवर द सॉलिड स्फीयर इज रोल्ड डाउन, वॉट एवर इन दैट केस इट इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन. मतलब वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है और साइमल्टेनियसली क्या होगा, वो रोटेट भी होगा. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है. ट्रांसलेशन मोशन मीन्स अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मोशन मीन्स अबाउट एन एक्सिस. अगर दोनों ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा तो हम कह सकते हैं कि सच अ टाइप ऑफ मोशन इट इज कॉल्ड रोटेशनल, सच अ टाइप ऑफ मोशन इट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ हियर वी टेक द ऑब्जेक्ट दैट इज सॉलिड स्फीयर performing the rolling motion without slipping inclined plane, without slipping inclined plane. So let's we start. So this is the diagram. So now here roll down, make an angle inclination theta, h be the linear displacement, h be the height, s be the linear displacement. Let's be some notation. M be the mass of solid sphere, r be the radius of solid sphere, theta be the inclination, h be the height, and s be the displacement of the body. Now here we have to calculate the linear speed. We know that whenever object is performing the rolling motion on inclined plane having velocity, we can calculate, remember the formula, 2gh divided by 1 plus k square divided by r square, and the acceleration formula a equal to g sin theta divided by 1 plus k square divided by r square. So most importantly आपको formula पता होना चाहिए, k square upon r square, k square upon r square for the solid sphere. So first of all, so what is the moment of inertia of solid sphere? Remember the formula, that is I equal to 2 divided by 5 mr square. So ये फार्मूला आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जल्दी से रिकैप कीजिए. I equal to 2 divided by 5 mr square. तो इस फार्मूला को हमें कंपेयर करना है विथ a basic formula of moment of inertia. What is the basic formula of moment of inertia? That is I equal to mk square in terms of radius of gyration. So इसको equating करना है. After equating, what we get, equating the both expression, that is mk square is equal to 2 divided by 5 mr square. So what's our observation on both sides? Mass get cancelled, so we take the ratio of k square divided by r square. So what we get, the ratio of k square divided by r square, so that is 2 divided by 5. So हमें substitute करना है k square by r square by 2 divided by 5. So what we get, so that is now here under root of 2 gh divided by 1 plus 2 divided by 5. Cross multiplication करना है, 5 ones are 5 and 5 plus 2 7, 7 by 5, 5 goes to numerator, so it becomes 5 2s are 10 gh divided by 7. So this is the formula of velocity. Remember, this is the most important formula. Next, acceleration. So what we get, derivation of acceleration, that is g sin theta divided by 1 plus k square by r square. Substitute 2 divided by 5. So taking the cross multiplication, 5 ones are 5, 5 plus 2 7, 7 by 5, और रेसिप्रोक डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा, दैट इज 5 divided by 7 g sin of theta. So this is the formula you have to remember. So I know that
दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अच्छे से इसको याद रखना है, टेक द स्क्रीनशॉट, राइटिंग करके उसको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आपको फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ इसको कमेंट करना है, शेयर करना है और लाइक जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।